Alaikum and good morning to everyone. This is Engineer Aftab Shah with you, and we started one topic in our previous lecture that is called diaglossia. Actually, before we start our lecture, beta, एक बहुत बड़ी correction है जो मैं करना चाहता हूँ. Most of the speakers in our country and other countries, they are calling this word like diglossia, and like we did in our yesterday lecture. But actually, इसकी जो pronunciation है वो diglossia नहीं है. I was just a bit doubtful about the pronunciation yesterday. Then I came across the dictionary and I checked it, and I was surprised to know that it's not diglossia. The word is actually diaglossia. Diaglossia. It's clear the stress is going to the first part, diaglossia. So we have taken one lecture yesterday about diaglossia, quite a big lecture, around half an hour. And today we are going to study the second part of diaglossia. In this part, we will be targeting two areas. Number one, we will target the functions of diaglossia. इसके बेटा function क्या है, ये किस काम आती है? And second one, we will be talking about the examples of diaglossia in our country, that is Pakistan. हम पाकिस्तान के अंदर इसके examples देखेंगे, and we will primarily be focusing on English, Urdu and Punjabi. Is clear to everybody? Here we go. First of all, we'll go to the functions of diaglossia. Can you people open your slides? Number one, we will go to the first function of diaglossia. That is about the two tables given in the slide. The first one is talking about the use of high variety of language, and the second one is talking about the use of lower variety of language. If we go to the high variety, sermon in churches are mosques. मस्जिदों में और जो चर्च वगैरह में जो खुतबात दिए जाते हैं वो हाई वैरायटी में होते हैं. Second one, speeches in parliament or political speeches. पार्लियामेंट के अंदर या जो सियासी तकरीर है वो हाई वैरायटी में होते हैं. यूनिवर्सिटी लेक्चर्स बेटा सारे के सारे हमारे हाई वैरायटीज में होते हैं. इवन द लेक्चर व्हिच आई एम डिलीवरिंग right now, this is in high variety of language, in English or high variety of Urdu. Here we go to the low variety, where the low variety is actually used. Instructions to the servants, waiters, workmen and clerks. इन सबको जो instructions दी जाती हैं वो lower varieties में होते हैं. Second one, we have personal letters, or like these days we call it WhatsApp messages, TikTok messages, or Slack videos, or messages on Facebook, etc. They are all given actually in lower variety of language. Conversation with the family, friends, and colleagues. All these conversations, the talkings and the communications, they are taking place in lower variety. Is clear, beta? But not with the students, by the way. With the students, we always use high variety of language. We cannot use lower variety of language. Here we go to the next one. The next one, please. High varieties beta used in news broadcast, खबरों में, अखबारात में वगैरह वगैरह. And it's also used in the newspaper, editorial, news stories, captions, in pictures. ये जितनी भी हमारे पास formal way of communication है, be it print media, social media. Social media is not mostly for the formal communication. Print media, electronic media, etc. They are all ways of formal communication, and only high level of a language we use in those communication ways. If we go to the poetry, novels and prose, we have the court or government offices. In some way beta iski high variety use hoti hai. On the other side, the low variety in the second table, it's used in radio, soap opera, etc. Radio means the dramas which are not related to very formal type of communication like normal dramas. Caption in the political cartoons के नीचे जो तस्वीरें होती. We have the conversation in tea stall. ये जो लोग इकट्ठे बैठ के दो चार लोग बातें करते, गप्पे शप्पे मारते, इनकी गुफ्तगू बेटा लो वैरायटी में होती है. And we also have folk literature. हमारे पास ये जो टप्पे वगैरह होते हैं, ये जो शादी ब्याह पे खवातीन बोल रही होती हैं, they are called folk stories or folk songs उनको कहते हैं, लोक गीत उर्दू में. ये सारे के सारे जो है they are always in lower varieties. Is clear to everybody? Here we go to the next one. That's about the examples of diaglossia in Pakistan, beta. In our country, in Pakistan, we can take the examples of diaglossia in two different ways. हम दो तरीके से बेटा ले सकते हैं, depending upon the definition of diaglossia that we give. हमने देखा है there are two different definitions of diaglossia. They are somehow different from each other, and mostly they are similar. Number one, पे diaglossia is a situation when one language is spoken in two different varieties. One is higher variety, other is lower variety. The higher variety is used in a formal setting, and lower variety informal setting. On the other side, there was also a definition that we studied yesterday, that
these two varieties of language, they can be two different languages. ये ना सिर्फ एक ज़बान की दो varieties हो सकती है, बल्कि ये दोनों varieties different languages हो सकती हैं. And this is actually the case that we will study in our lecture today about diaglossia in Pakistan. Is clear बेटा? हम देखेंगे डायाग्लोसिया की पाकिस्तान के अंदर जो मिसाल है इन इस सेकंड डेफिनेशन के तनाजुर में, दैट इन पाकिस्तान we have total 3 languages, especially in Punjab. The number 1 is we have Punjabi, number 2 Urdu, number 3 English. But at national level we have 2 languages. We have Urdu and we have English. So according to the definition of diaglossia, that there is a high variety that is used in official communication or formal communication, and there is a low variety of same language, or there is a lower language, lower side of language, or lower language itself that is used in other varieties. तो इसमें हम बेटा जो डायग्नोसिया में सिचुएशन देखेंगे, हमारी जो हाई क्लास है, जो एलीट क्लास है, इन ऑफिसेज आर इन अदर एरियाज, वहाँ जो ज़बान इस्तेमाल होती है दैट इज़ मोस्टली इंग्लिश, एज आई नॉर्मली यूज इन माई क्लासेस. तो इंग्लिश को हम हाई वैरायटी कंसीडर करेंगे. और दूसरी तरफ जो हमारी नॉर्मल सेटिंग में यूज़ होती है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, वो होती है उर्दू, घरों में वगैरह वगैरह, तो उसको हम उर्दू कंसीडर करेंगे. और इससे अगर तीसरे लेवल पे जाएंगे पंजाब के अंदर, तो हमारे जो देहातों में ज़बान इस्तेमाल होती है दैट इज़ पंजाबी. So we can see that the high variety of language that is used in Pakistan as an official language, or in the all the ways which I have told you already, in the broadcasting or in print media, in newspaper, editorial, etc., mostly to show the elite power of the people, or the the educational upper hand of the people. They are using English. On the other side, we also speak Urdu, but it's mostly preferred to be spoken in the homes, etc. उसकी तरफ अगर पंजाब की खास बात करें तो we have Punjabi. We have 3 different levels, particularly talking about our Punjabi. बेटा पर इसको हम स्टडी कैसे करेंगे? हमें पता तो चल गया, अंग्रेजी है, पंजाबी है, उर्दू है. हाउ डू वी स्टडी दैम एक्चुअली? हम इन तीनों जुबानों को, जो कल सारे पॉइंट पढ़े हैं ना हमने, द फीचर्स ऑफ डायग्लोसिया सिचुएशन, about vocabulary, about lexical resources, about grammar, about phonetics, phonology, semantics, syntax, origin, use, functions, ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इन तीनों जुबानों को देखेंगे. हम देखेंगे बेटा अंग्रेजी किधर इस्तेमाल होती है, उर्दू किधर इस्तेमाल होती है, पंजाबी किधर इस्तेमाल होती है, इनकी वोकैबुलरी में क्या फ़र्क है, ये आई किधर से है, इनके फंक्शंस कौन से होते हैं, ग्रामर में फ़र्क है, इनके स्पेलिंग्स में, इनके साउंड्स में फ़र्क है. व्हाट हैपन्स, यही एक वो वजह है कि हम ज़्यादातर जब उर्दू यूज़ करते हैं और कभी कभार जब अंग्रेजी यूज़ करते हैं, आवर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी डिफरेंट. बट अगर हम मैक्सिमम जो है वो अंग्रेजी यूज़ करते जाएं, तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी बेहतर होती जाती है. दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली आई प्रीफर टू स्पीक इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज अदरवाइज इन उर्दू और पंजाबी द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज डिस्टर्ब्ड. And my purpose of teaching students is to improve not only their grammar or structure or vocabulary, but also the major one is their pronunciation. कि जब वो उनको मैं पढ़ाऊँ तो उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती जाए. तो इस वजह से मेरी जो ज़ाती कोशिश होती है कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो क्लासरूम के अंदर है या दूसरी क्लासेस के अंदर है, दैट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. इस क्लियर? If we go and study, हम बेटा वो सारे फीचर देखेंगे इन तीनों लैंग्वेजेस में. एग्जाम्पल्स ऑफ डायग्लोसिया इन पाकिस्तान. We will not study these slides actually, just skip them all and we will go to diaglossia in Pakistan. And the first example, that is Urdu versus English. ये बेटा हम देखेंगे Urdu versus English. We will study that. Number 1 about function. What are the functions of Urdu versus English? We see that a key defining characteristic of diaglossia is that the two varieties high and low are kept apart functionally. कहते हैं अगर डायग्लोसिया को हम अपोजिट सिनेरियो में देखें, कि पहले हमने ये देखा है कि एक ही जुबान की दो वैरायटीज हाई और लो इस्तेमाल होती है, तो दिस इज अ डायग्लोसिया सिचुएशन. बट अगर हम अपोजिट तरीके से चलेंगे, किसी मुआशरे में दो जुबानें इस्तेमाल हो रही है, एक हाई वैरायटी एक लो वैरायटी, फिर भी डायग्लोसिया. तो अगर इस डेफिनेशन को हम लें तो की डिफाइनिंग जो फीचर है डायग्लोसिया सिचुएशन का, दैट इज अबाउट फंक्शन. जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं, फॉर्मल फंक्शंस हैं, दे आर कंडक्टेड इन वन लैंग्वेज, एंड इनफॉर्मल और फैमिली और नॉर्मल फंक्शंस आर कंडक्टेड और दे आर कैरीड आउट इन अनदर लैंग्वेज. सो जो ऊपर वाली लैंग्वेज है दैट इज ईच लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज जो दूसरे वाली दैट इज एन लैंग्वेज.
H and L, दैट डजंट मीन बेटा कि कोई पार्ट जो है वो दूसरे से बेहतर है, ये सिर्फ उनके नाम है। सारी ज़बानों के सारी वैरायटीज़ की अपनी कदर कीमत है। हम घरों में अगर H वैरायटी यूज़ करेंगे तो दैट विल बी यानी समथिंग डिफरेंट, वो कुछ चीज़ मुख्तलिफ होगी, हमें उसका प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और वो एक गुफ्तगू का जो एक मज़ा है, जो वालदैन के साथ हमें बात करके एक सुकून मिलता है, भाई बहनों के साथ बात करके एक ज़हनी तसल्ली होती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अल्फाज से ही हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल रही होती हैं। इट्स क्लियर? So here we go. Are kept apart functionally. One is used in one set of circumstances and the other in an entirely different set. एक जो है वो एक किस्म के सेट में होती है और दूसरी जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सेट में इस्तेमाल होती है. For example, English or H variety in Pakistan is used for delivering formal speeches in the functions of high government officials and inter-office communications. In contrast, Urdu, the L variety, is used in giving instructions to workers in low prestige occupations or household servants, or in conversation with families in popular program functions, or for example, mess on the radio and television. Functions are programs on the radio and television. I think इसकी translation करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, people can understand it. Here we go. The next is about the prestige. Prestige, the value, the social status of something. इसकी बेटा, the H variety is considered to be highly valuable in our society, and the lower variety is considered second in value in our society. Most of the people, if they are able to speak English, like I'm giving every day the word of the sentence of the day, if you people can speak 3-4 sentences of the day with someone, उसको पसीना आ जाएगा कि भाई जो है ना वो किस तरह जो है मैं आप इसको टैकल करूँ जवाब. And I still have many examples of my students, और मेरे चैनल के ऊपर जो है उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं. एक स्टूडेंट थे मेरे पास, अब बिकॉज इट्स बीइंग रिकॉर्डेड आई विल नॉट गिव द नेम. अब वो मैट्रिक उन्होंने किया हुआ था, और यानी वो ऐसे इंटेलिजेंट नहीं थे. व्हाट हैपन्स कि वो मेरे पास आया, आजकल वो स्टूडेंट जो है वो हंगरी में स्टडी कर रहा है, यूरोप के अंदर. तो अंग्रेज़ी का उसको जुनून था, शौक था. तो हुआ क्या, उसने बड़ा शोर डालना करना क्लास में, अंग्रेज़ी के अंदर बड़ा शोर करना करना, तो वो अच्छी सीख गया, उसकी बाकायदा बड़ा अच्छा जो है वो उसकी स्पीकिंग पावर बन गई. अब उसने किसी बैंक में जाना, किसी ऑफिशियल काम में जाना है, किसी स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, या ऑफिशियल ऑफिस में, उसने जाके उधर अंग्रेज़ी बोलती है. और उसने फिर मुझे बताना करना, सर वैसे तो उधर किसी को जो है ना वो सादा अल्फाज में मुँह नहीं लगाते थे, लेकिन जब मैंने जाके अपनी कम्युनिकेशन पावर शो की है तो लोगों ने मेरी थोड़ी कदर की है, मैनेजर्स ने जो है वो मेरी बात को सुना और समझा, और इससे फ़र्क पड़ता है. बिकॉज ऐसा इसमें ज़बानों से ज़्यादा इसके साथ जो लोगों की जो लोग अहमियत अटैच कर देते हैं उससे फ़र्क पड़ता है. ज़बानें सारी ज़बानें होती हैं, और ज़बानों सारी जो है वो अल्लाह ताला की बनाई होती है, बट एट द एंड ये लोग होते हैं जो अपनी उस एक्सपेक्टेशन से या जो सिग्निफिकेंस वो अटैच करते हैं, उस वजह से ज़बानों की कदर कीमत में फ़र्क पड़ जाता है. तो English is considered to be a prestige language, a prestigious language in our society. On the other side, उर्दू जो है बेटा वो दूसरे सर्कल में उसको बड़ा ही कंसिडर किया जाता है, जो हमारी डेली गुफ्तगू है. Here by you can read this paragraph by yourself, और अगर कोई confusion आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और here we go to the next one, that's about, और बेटा जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको इस पैराग्राफ पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन आए तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अदरवाइज आप गूगल पे जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं. द थिंग्स आर इजियर एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. हियर वी गो टू द लिटरेरी हेरिटेज, द थर्ड मेजर फीचर. हमारे पास बेटा जो लिटरेरी हेरिटेज है पाकिस्तान के अंदर, वो दोनों ज़ुबानों में मौजूद है. इंग्लिश का अपना जो है वो लिटरेचर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, और दूसरी तरफ जो उर्दू है उसका अपना लिटरेचर मौजूद है. तो दोनों ज़ुबानों का लिटरेरी हेरिटेज है. बट इसमें जो चीज़ लिखी गई है वो यानी ज़्यादा है कि अंग्रेज़ी के अंदर जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वी आर मोर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेट पैटर्न्स, जबकि जब उर्दू में लिखते हैं तो वी आर अ बिट फ्लेक्सिबल इन आवर अप्रोच, कि हम फिर उर्दू चूँकि वो हमारी अपनी ज़ुबान है तो हम उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं. इस क्लियर? हियर वी गो टू द नेक्स्ट वन, एक्विजिशन. जो H variety है, the English language is not acquired, it's learned in our institutions. या हम सीखते हैं अपने अदारों से. On the other side बेटा जो उर्दू है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. Acquiring and learning actually these are two different words.
Learning means you are going to somewhere you and learning something. Acquiring means आप किसी के पास नहीं जाते, हम रोजमर्रा जिंदगी में ऑटोमेटिकली चीजों को सीख जाते हैं. Is clear? So Urdu is acquired, Punjabi is acquired, but English is learnt. Is clear? Here we go to the next one, beta. That's about standardization. Both the languages are in well standard form. Even in Urdu, the part of Urdu that is mostly spoken in formal settings, that's well standard Urdu language. But the part of Urdu that is spoken in non-standard settings, in informal setting, that's not very much standard by the way. इसी तरह अंग्रेजी का भी ये हाल है. अंग्रेजी जो हम क्लासरूम में, यूनिवर्सिटीज में और ऑफिशियल सेटिंग्स में यूज करते हैं, दैट्स वेरी मच स्टैंडर्ड. बट इफ यू पीपल वांट टू यूज इंग्लिश in your day-to-day communication, discussion, you cannot use the same part of English that you need to learn the contractions, the linking of sounds, the changing of words, the different vocabulary that is used in lower level settings in our society. वो सारी हमें सीखनी पड़ती है. That's why it becomes almost difficult for us. जब हम जो हाई लेवल जो वैरायटी है इंग्लिश को हम लोअर लेवल पे यूज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे लिए परेशानी आती है और हम उसको यूज नहीं कर पाते. एंड वी बिकम कंफ्यूज दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली. बिकॉज हम कर क्या रहे होते हैं, हम जो ऑफिशियल इंग्लिश को हम उसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. इस वजह से हम परेशान होते हैं. अगर हमें वो सारे फ्रेजेस और वर्ड्स और ईडियम्स आए जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी की, तो वी कैन यूज इट वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डू यू नीड टू गो, क्या आपको जाने की जरूरत है. डू यू नीड टू गो, ये एक इसका फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है. दिस इज एच वैरायटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और दूसरा जो आम फाम गुफ्तगू होती है, तो हम उसमें कहेंगे wanna go, जाना, that's it. तो wanna go is much more easier and softer on our mouth to speak. Do you need to go is a difficult word. Do you is changed into do you when you are speaking English. In writing we write do you. In speaking we say do you. Do you wanna go? Not do you want to go. Do you wanna go? It's a different one. तो जब हमें अंग्रेजी हमने अपनी डे टू डे लाइफ में बोलनी होती है, तो हम उसकी दो वैरायटी सीखते हैं, लो तरीका कर सीखते हैं, फिर हम बोल पाते हैं. हाई वैरायटी में हम बोल नहीं पाते. It's clear? Here we go to the next one. That is about stability. Both the languages are very much stable. Urdu is very much stable. English is very much stable. It's clear? Here we go to the next one about grammar. They both have grammatical rules, and but actually in English we are more strict about grammatical rules as compared to Urdu. It's clear? Grammar of each variety is highly defined and standardized in case of using two varieties of the same language. But in case of using two different languages, both may have highly prescribed grammar as English and Urdu in Pakistan. कहते हैं अंग्रेजी के अंदर अगर हम बात करें, अंग्रेजी की दो वैरायटीज को पकड़े, तीन वैरायटीज को पकड़े. पाकिस्तान में तो एक ही वैरायटी इस्तेमाल हो रही है ना. बट इफ़ यू गो टू सम नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, आप यूके में चले जाएं, आप कनाडा में चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, वेयर एवर यू गो वेयर इंग्लिश इज नॉर्मली स्पोकन, यू विल फाइंड मैनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. बड़ी ही मुख्तलिफ वैरायटीज बेटा आएंगी. तो उसमें देखेंगे जो हाई वैरायटी है उसकी ग्रामर स्टेबल है, लोअर वैरायटी की ग्रामर स्टेबल नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है, उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं. इसी तरह उर्दू के अंदर, उर्दू की जो हाई वैरायटी है उसकी ग्रामर स्टेबल है, लो वैरायटी की ग्रामर स्टेबल नहीं है. और इन केस ऑफ टू लैंग्वेजेस लाइक वी हैव इन पाकिस्तान, उर्दू एंड इंग्लिश बोथ, तो दोनों की ग्रामर जो है आगे जो उनकी दोनों की हाई वैरायटीज है उसमें स्टेबल है, जो दोनों की लोअर वैरायटीज है उसमें स्टेबल है नहीं है. वी हैव टू गो अगेंस्ट ग्रामेटिकल रूल्स. इस क्लियर बेटा? हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इवन अप टू एमए इंग्लिश लेवल, दैट इज हाई वैरायटी ऑफ इंग्लिश. दैट इज नॉट द इंग्लिश विच वी कैन यूज इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन. इसी वजह से बच्चे हमारे एमए इंग्लिश भी कर जाते हैं, समटाइम दे आर एमफिल, बट दे आर नॉट एबल टू यूज इंग्लिश प्रॉपर्ली इन देयर डे टू डे लाइफ, बिकॉज बेटा उनको वो तो पढ़ाया ही नहीं गया और ना ही बताया गया कि दिस इज नॉट द इंग्लिश दैट यू कैन यूज. वो ग्रामेटिकल इंग्लिश है, दैट्स द इंग्लिश ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, नॉट द इंग्लिश ऑफ आवर सोसाइटी और इंग्लिश ऑफ देयर सोसाइटी. तो उसको सीखने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ, वी नीड टू अटेंड सम लैंग्वेज क्लासेस, एंड स्पेशली आई एम recording every day some lectures related to language and sounds and grammar. तो वो हमें देखने पड़ते हैं, हमें उस तरफ जाना पड़ता है. Then we can learn that part of language. Is clear? बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
Okay, wish you all the best. Here we go to the next one. This is about lexicon, beta. Lexicon vocabulary. Vocabulary को देखते हैं. दोनों की vocabulary उर्दू की ओर है, अंग्रेजी की ओर है, और इनके अंदर जो varieties है उनकी हाई की ओर है, लोअर की ओर है. It's clear. Here we go quickly through the next one. That is about phonology. Phonology अंदाजे जो है ना वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है. तो आप देखिए उर्दू जो लोग घरों में यूज़ करते होते हैं लाहौर में, वो उर्दू और तरह यूज़ करते हैं, और जो किताबों में लिखी जाती है वो उर्दू और लिखी जाती है. इस तरह अंग्रेजी का भी यही हाल है. देन वी गो टू द नेक्स्ट वन. इट्स अबाउट पंजाबी वर्सेस उर्दू. तो बेटा इसमें भी हम इन सारे फीचर्स को स्टडी करेंगे. तो जब भी हमने डायग्लोसिया सिचुएशन को स्टडी करना है, we have two options. Either we can study the two varieties of same language, or we can study two different languages at the same time. But these are the parameters that we have already taken: grammar, vocabulary, lexicology of the and phonology of the language, and the way it's used, and it's all the other features. ये सारे के सारे बेटा इसमें सब में डिफरेंट है. इसमें 4 5 6 दिए हुए, आप लोग 15 20 कर सकते हैं. आपने लिंग्विस्टिक्स के अंदर जितनी फील्ड्स की हुई हैं, आप सिंटैक्स को भी लेके आ सकते हैं. यू कैन जहाँ जहाँ बेटा लैंग्वेज में फ़र्क है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं. इट्स क्लियर. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. What we have studied today, we have studied about the use, the function of diaglossia, situation in Pakistan where the H variety of the language is used and the L variety of the language is used. And after that, we have studied the example of diaglossia when we taken Urdu and English in comparison with each other. Not the two varieties of Urdu or not the two varieties of English. Is clear? And now we can also study about the diaglossia in Urdu versus Punjabi situation, or in any two languages situation. But we don't have time for that. Actually, we'll keep it up to here. Thank you so much for your time, and those who watched our lecture online on YouTube. Really thank you all. And if you people have any comment or suggestion or anything related to the lecture that you just finished, you can write your comments in this suggestion box, in the comment box, and we will be happy to reply your comments. Thank you so much, everyone.